कीवर्ड्स, राइट। सो हम वन बाय वन कीवर्ड्स देखेंगे और उसके प्रैक्टिकल्स भी हम देखेंगे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज दिस कीवर्ड, राइट। सो व्हाई वी रिक्वायर्ड दिस कीवर्ड इन सी प्लस प्लस, हम क्यों यूज कर रहे थे? यस, हम सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस में क्यों यूज कर रहे थे? दिस कीवर्ड इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सी प्लस प्लस लैंग्वेज, राइट, एंड दैट विल बी अडॉप्टेड फ्रॉम द सी प्लस प्लस। यस, एनीवन? दिस कीवर्ड सर वो हम जो करंट क्लास में वर्क कर रहे हैं उसके इंस्टेंस वेरिएबल उसका रेफरेंस के लिए उसके इंस्टेंस में So वो रेफरेंस this keyword is used to refer, this keyword is used to refer your reference variable of current क्लास object, राइट, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल के पास क्या होता है? आपके करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, राइट। सो दिस कीवर्ड क्या करता है? उसी ऑब्जेक्ट को करता है पॉइंट आउट, राइट। सो दिस कीवर्ड इज रेफर्ड योर रेफरेंस वेरिएबल ऑफ योर करंट क्लास ऑब्जेक्ट, राइट। सो अल्टीमेटली दिस कीवर्ड इज रिप्रेजेंट और इट्स identify your current class object also, right? So now first thing we have to understand how what are the ways to we are going to handle the this keyword, right? So there are ultimately a 6 way to handle a this keyword in a Java, right? So the first way is कि आप कैसे कैसे उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, right? So पहला जो है कि हम this keyword कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो the first one is to refer current class instance variable, right? आपका जो करंट क्लास है उसका अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल चाहिए तो आप यूज कर सकते हो दिस कीवर्ड का, राइट। दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर योर करंट क्लास रेफरेंस, राइट। आपके करंट क्लास के रेफरेंस को यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हो दिस कीवर्ड का। लेट मी सी वन एग्जांपल ऑफ दिस, राइट। मैं वन बाय वन आपको बताता जाऊंगा और वन बाय वन हम उसके एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे। ओके, so let me save first this file. Class this one, this is our main file. The first scenario is to refer current class instance variable, right? आपको इंस्टेंस वेरिएबल को क्या करना है? रेफर। इंस्टेंस वेरिएबल किसको बोलते हैं? विच वेरिएबल इज नोन एज एन इंस्टेंस वेरिएबल? हम किस वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं? Instance, yes, instance variable are those variable which is defined inside your constructor, right? Or we can say that the value of instance variable, the value of instance variable are passed at object creation टाइम, राइट। सो आपका इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू उसको कब पास होता है? जब आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, राइट। सो सेम यहाँ पे भी आपको वही करना है, राइट। आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते, आप जो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो, आपका इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होता है। और इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होता है? जब हम किसी भी क्लास के अंदर एज एन कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं तो, राइट। जैसे यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास टेस्ट, राइट, एंड हियर आई विल डिफाइन
values of that variables in that particular class, like integer of a, integer of b, right? I'll define here integer of a, integer of b, right? And second thing, I also want to define a constructor. So I'll define a constructor with the parameterized constructor. So I'll define here int of a, int of b, right? हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया int of a और int of b again, right? Now ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब हम टेस्ट का ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। तो जब हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे टेस्ट टेस्ट और यहाँ पे ब्रैकेट में I'll just pass two values 10 and 20, so automatically that value of 10 and 20 will be passed टू योर कंस्ट्रक्टर। या ये जो वैल्यूज है इसकी 10 और 20 की, वो वैल्यूज आपकी जो है वो वैल्यूज किसको पास हो जाएगी? आपके कंस्ट्रक्टर को पास हो जाएगी। तो ये जो वेरिएबल है आपके इंटीजर ए और इंटीजर बी, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, राइट? बिकॉज इंस्टेंस वेरिएबल आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, राइट? सो यहाँ पे अब इस ये जो इंस्टेंस जो ये वेरिएबल है उसको हम डिक्लेयर करेंगे, उसको वैल्यू पास करेंगे थ्रू द दिस कीवर्ड, राइट? सो वो हम कैसे करना है? सो फॉर दैट विल जस्ट यूज दिस डॉट a equals to a and this dot b equals to b, right? So what exactly we are going to do? We just passing the value of instance variable to the particular current class object variable, right? So this value, this value of a which is belongs to your constructor call, right? ये यहाँ से आ रहा है और ये जो वैल्यू a का आया है वो वैल्यू हम किसको पास कर रहे हैं? वो पास कर रहे हैं हम करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर जो a है उसको। सो वो वैल्यू अल्टीमेटली किसको पास हो रहा है? आपके a को पास हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे सिनारियो कुछ इस तरह से है कि यहाँ से जो वैल्यू पास होगा वो वैल्यू जाएगा आपका यहाँ पे इंटीजर ऑफ बी के अंदर, वो वैल्यू यहाँ से पास होगा वो जाएगा यहाँ पे इंटीजर ए के अंदर, और वो वैल्यू वो किसको पास करेगा? करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर जो ए अवेलेबल है उसको ये पास करेगा। और वो ए कौन सा है? तो वो ए है आपका टेस्ट के अंदर हमने जो डिक्लेयर कर रखा है वो ए है, राइट? सो दिस इज रेफर्ड योर इंस्टेंस वेरिएबल, राइट? वो करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को ही क्या कर रहा है? अल्टीमेटली उसको कर रहा है refer, right? So this is the way to declare your constructor, right, with the help of this keyword. Now how we can, let me check values are perfectly will get or not. So I'll just define one more method here, display method. Plus a plus value of b. So that is a b. Okay, so I'll just print this values. So now I have to call this method also, d dot your display. Okay, fine. So let me run this code, let me check we'll get our output or not, right? So for that we just have to go to the company, right? Java TFS, I require CMD, I don't require this. Okay, fine. So let me check, this is this one dot Java, perfectly compiled, this one dot class, right? So we'll get our value 10 and 20, right? So this is the first scenario. We have to we just pass the values of our instance variable of the current class through our this keyword. Clear? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the second method, the second way is to invoke current class मेथड, राइट? आपको अगर आपके करंट क्लास की मेथड को इन्वोक करना है तो भी आप कर सकते हो थ्रू योर this keyword, right? So here case number 2, this 2.java, right? So let me see the code of this main, right? अब क्या करना है? हमें कॉल करना है करंट क्लास की मेथड को कॉल करना है, राइट? सो वो हम कैसे करेंगे? नॉर्मल वे में हम कैसे करते हैं? अगर मुझे किसी भी मेथड को कॉल करना है तो हम नॉर्मल वे में कैसे करते हैं उसको कॉल?
अगर मुझे करना है यहाँ पे I have a let me 1 minute, let me make one code. I'll just require a test class, and here we just have a one method of m1, right, and we'll write here system dot out dot println method of m1 is called, right, and I require one more method because I want to invoke this method, right? So m2, and here I'll just write here system dot out dot println method of m2 is called, right? So this is the second method. Now I want to call m1 method from m2, right? So can we write like this m1? Is it possible? Is it possible? Is it possible? Can I write like this? Test t equals to new test and t dot m2, right? So I'll just only call my m2 method. मैं सिर्फ कॉल कर रहा हूँ m2 मेथड को कॉल कर रहा हूँ. So जैसे ही मेरा m2 मेथड कॉल होगा अल्टीमेटली मेरा m1 भी कॉल होना चाहिए, क्योंकि m1 को इंटरनली m2 ही क्या करवा रहा है, कॉल करवा रहा है, राइट? सो इज इट पॉसिबल? ये हो सकता है. अभी हमने दिस कीवर्ड नहीं डाला है, right, but is it possible? My question is it possible? दिस कीवर्ड डालना पड़ेगा ना सर? नहीं, अभी होगा कि नहीं होगा? दिस तो बाद में डालेंगे ही इसका. नहीं, शायद नहीं होगा. Let me check what kind of error we get. Perfectly compiled, no error. Perfectly called without error, right? Because दोनों मेथड एक ही क्लास के अंदर है, and both method, if you are not defining any access specifier, both working as a public, right? So you can easily get back that method, right? तो आप कर सकते हो. This is a way to call a particular method also, right? But if we want to call this content with the help of this, then you can again put here this dot m1. It's also allowed. Look, all right, so both the scenarios are allowed. This dot m1 is also allowed, and you can directly called m1 is also allowed, all right? क्यों? क्योंकि दोनों मेथड एक ही क्लास के अंदर अवेलेबल है, राइट? तो वहां पे आप m1 से भी उसको कॉल कर पाओगे, या आप दिस डॉट m1 से भी उसको कॉल कर सकते हो. क्लियर रचना? Yes sir. Okay, next third way to declare this, which is to invoke current class constructor, right? If we want to call the constructor of the current class, then we again use this keyword, right? Like, let me see. Class this3 main, right? Let me declare one class here, class test. Then I just define one variable first, or we can directly define the vet within a constructor, integer of a, right? System dot out dot println parameterized constructor called, right? So ये parameterized constructor क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, right? So I'll just define t equals to new test, and I'll just pass the value of 10 here, right? So whenever I'll run this code, it's only call the constructor which is available with the parameterize, right? If we hit the code on our console, java c this3 dot java, okay, perfectly compiled.
Look, so parameterized constructor call, but we want to call the constructor with the help of this keyword. So how we can do that? So I'll just take one more constructor with default argument. No argument is there. System dot out dot println. This is default constructor. All right, and I want to call this constructor, so it's so easy. You just pass here as a this. All right, so this refers your current class object, which is your T, right? And you call the constructor without argument, so it directly goes with your default constructor, right? Let me check. All right, 1 minute. Okay, fine. Look, which one is compiled first? It's run the default constructor first, right? Because you write here this first, so it first goes to the test constructor and run this statement, right? And after that it runs your second statement, right? So ultimately you can call the constructor with the help of this keyword also, right? So you can call invoke the constructor with the help of this keyword. Clear? So this is the third way. Clear? Yes, sir. Same, Yes, sir. same you can even call the parameterized constructor. Same you can even call the parameterized constructor. Like if I'm not defining here and I write here this with 10, all right, and I just comment this code, right? So it's again called. 1 minute, semicolon missing. क्या है? Call to this must be first statement in constructor. 1 minute. So just required to place it here. Okay, done. Look, so parameterized constructor फर्स्ट कॉल हुआ, फिर आपका डिफॉल्ट हुआ. सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी आप दिस से कॉल कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो, राइट? दोनों में से आप किसी को भी कॉल कर सकते हो थ्रू योर कंस्ट्रक्टर. क्लियर? क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Next is fourth one is to pass as an argument in the method, right? अगर आपको उसको पास करना है, मीन्स दिस कीवर्ड को पास करना है एज एन आर्ग्यूमेंट इन योर प्रोग्राम, राइट? सो वो कैसे कर सकते हैं हम? सो लेट मी चेक वन मोर प्रोग्राम, दिस 4.java. Okay, fine. So I'll just close this code. So class this 4, this is a main, right? And here let me define one class test, right? And we required to call this particular class as an object. So I'll just define test equals to new test. So it call my particular class, but what we required to do, we have to pass as an argument in a method, right? हमें method के अंदर this keyword को क्या करना है? as an argument pass करना है, right? तो वो हम कैसे करेंगे? क्योंकि this keyword किसको कॉल करता है? दिस कीवर्ड कॉल करता है आपके ऑब्जेक्ट को, राइट? आपके ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है? कॉल करता है, राइट? सो व्हाट आई विल डू हियर, आई क्रिएटेड वन मेथड m1 एंड आई क्रिएटेड एन रेफरेंस वेरिएबल ऑफ टेस्ट क्लास, राइट? सो सिस्टम dot out dot println, this is 1 minute, let's give an error. So this is the method of m1 called, right? So what I do, I'll create a method with the help of test reference variable, right? So ultimately what we do, we just call this method, this particular method with the help of another method, right? How? So here we'll define one more method, m2 method, right? And in that method what we pass m1 in bracket of this, all right? And then we'll just call here t dot m2, right? So what exactly happened? It's created an object, it calls your m2, so it goes to your m2 first,
right? And in that we'll call a m1, right? With this refers your current object. That current object is your t. So ultimately it match this particular parameter. So ultimately your m1 is called, right? So we'll get this output after this, after the running of particular code, right? So let me hit the code on our console. Check it. Java C this 4.java. Yeah, compilation is fine, so our code is perfect, and we'll get our output. This is the method m1 call. Clear? क्या किया मैंने पता चला? क्या किया मैंने पता चला कि नहीं पता चला? सर फिर से समझाओ ना। हाँ, 1 मिनट. सो यहाँ पे हमने क्या किया, विल क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्लास, राइट? सो ये यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो अभी रनिंग मोड में है वो कौन है? टी है, जो रिफर कर रहा है आपके टेस्ट क्लास को रिफर कर रहा है, राइट? और हम यहाँ से मेथड कौन सा कॉल कर रहे हैं? m2 वाला मेथड कॉल कर रहे हैं, राइट? तो आपका पॉइंटर, आपका कंपाइलर कहाँ पे मूव होगा? m2 के पास मूव होगा. हम m2 के अंदर किसको कॉल करवा रहे हैं? m1 को. But m1 required the object of which class? Test, right? Which is as a parameter. So यहाँ पे टेस्ट का ऑब्जेक्ट उसको चाहिए, और हमने यहाँ पे उसको क्या कर दिया है? पॉइंटिंग ऑफ दिस. अगर मैं दिस को पॉइंट कर रहा हूँ तो m2 को किसने कॉल किया था? m2 को कॉल किया था ऑब्जेक्ट ऑफ t ने. तो वो हुआ आपका करंट क्लास का ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो फॉर्म होगा वो होगा m1 इन ब्रैकेट ऑफ t, और वो t इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट, राइट? तो वो यहाँ पे मैच करेगा. यहाँ आपने जो पास करना है यहाँ पे टेस्ट का ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट आपने ऑलरेडी पास किया हुआ है, राइट? तो अल्टीमेटली आपका ये जो स्टेटमेंट है वो जाके कॉल होगा और वो एग्जीक्यूट होगा. क्लियर? यस सर. ओके. सो नेक्स्ट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, राइट? फिफ्थ वन इज to pass an as argument in the constructor call. यहाँ पे हमने मेथड में कॉल करवाया था, अब हम किसके अंदर करवाएंगे? वही चीज कंस्ट्रक्टर के अंदर करवाएंगे, राइट? लेट मी चेक, लेट मी सेव दिस कोड, this 5.java. okay, now let me make this 5 main class test, राइट? अब मुझे क्या करना है? कंस्ट्रक्टर के अंदर ये कॉल करवाना है, राइट? सो व्हाट आई विल डू, I'll do the tricky things here, राइट? मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि मुझे यहाँ पे पास करना है टेस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस कीवर्ड को, राइट? मींस मेरा टेस्ट कंस्ट्रक्टर का जो आर्ग्यूमेंट है वो होना चाहिए दिस, राइट? तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूंगा, टेस्ट इन ब्रैकेट ऑफ, मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ दिस 5 ऑफ टी, सॉरी टी नॉट ट्रांजिएंट टी, राइट? सो अगर मुझे टेस्ट को कॉल करना है, मींस मुझे टेस्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो मुझे कंपलसरी टेस्ट दिस 5 का क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, तब जाके मैं टेस्ट को कॉल कर पाऊंगा, राइट? सो यहाँ पे आउटपुट प्रिंट एलन टेस्ट इज कॉल्ड, राइट? सो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि अगर मुझे टेस्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना है तो कंपलसरी मुझे ऑब्जेक्ट किसका चाहिए? दिस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉइंटिंग होना चाहिए, तब जाके ये कंस्ट्रक्टर क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, राइट? ये मेरा रिक्वायरमेंट है, राइट? सो अब उसको डिक्लेयर कैसे करना है, राइट? दिस इज अवर स्ट्रक्चर, बट हाँ, अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करने बैठूंगा तो वो नहीं होने वाला, राइट? सो फॉर दैट वी रिक्वायर some coding, राइट? So first thing what we do, we'll just define the object of this first. So this 5t, I'll just declare references of this. Now second thing मुझे क्या करना है? मुझे क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट ऑफ
this 5 का, right? So I'll just created this 5 t equals to new this 5, right? So मैंने क्रिएट किया यहाँ पे जो मेरा करंट क्लास है उसी का मैंने किया ऑब्जेक्ट क्रिएट, बट अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, राइट, तो वो क्या करेगा, वो आपको उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने में हेल्प करेगा। किसका? दिस 5 का। टेस्ट का तो वो कॉल ही नहीं करेगा। अगर मुझे टेस्ट का कॉल करवाना है तो मैं कंपलसरी यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेस्ट टी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, न्यू टेस्ट होना चाहिए, बट ये मुझे करना ही नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे कंपलसरी इस कंस्ट्रक्टर के अंदर किसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, दिस 5 का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, राइट? सो ये मुझे करना पड़ेगा, बट अगर ऐसे ही करना है तो यहाँ पे दिस कीवर्ड का तो कोई यूज आया ही नहीं। हमने यूज किया नहीं किया, अभी तक हमने कोई दिस कीवर्ड इसमें अप्लाइड नहीं किया है, राइट? सो दिस इज नॉट अ वे, बट हाँ वी कैन डू इट इन अनदर वे। वो कैसे करना है, लुक, सो ये 1 मिनट गाइस। हेलो, सो अब इसको कैसे करना है, राइट? सो फॉर दैट व्हाट वी डू, विल क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर ऑफ this 5, right? It's a default constructor, and can we write here test t equals to new test in bracket of, we just pass here as an this, right? So I'll just comment out this line, right? So मैंने यहाँ पे क्या किया, look, मैंने यहाँ पे क्या करा, ये मेरा मेन क्लास है, this is my main class. I created a constructor of main class, right? It's possible you can create your constructor of main class, that's a valid thing, right? Second thing, I created a object of our main class first, and whenever the object is created, it calls your constructor of that main class. So ultimately when this statement is going to be execute, it's execute this statement, this 5, and when this statement is execute, we'll just write down here as an argument of you have to create the object of which class, test class. आपको test class का क्या करना है, object create करना है, right? But we'll just pass here as a this. This indicates what, ये this किसको point कर रहा है कि ये जो constructor है आपका this 5, उसको कौन सा object call कर रहा है, उसको object call कर रहा है t, right? So ultimately this statements are created as new करके यहाँ पे आएगा new, फिर यहाँ पे आएगा टेस्ट, एंड इन ब्रैकेट ऑफ आ जाएगा आपका टे। सो दिस इज द अल्टीमेट स्टेटमेंट विच इज फॉर्म्स, राइट? एंड जैसे ही ये कॉल होगा, ये कॉल करेगा अपने खुद के कंस्ट्रक्टर को, जो कंस्ट्रक्टर आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, राइट? एंड दिस कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हमने दिस उसको दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो कैसे करेगा कि ये इसको डिक्लेयर करेगा दिस 5t इक्वल्स टू, ये जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ से पास करा है वो ऑब्जेक्ट आपका सीधा यहाँ पे हो जाएगा फुलफिल, और तब जाके आपका ये कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज अगेन अ वे you can invoke the constructor with the help of this keyword, right? Clear or get it out? Yep, it's a similar kind of methods, but the way of presentation is different. Yeah, Clear, sir. clear. Okay, fine. Let we hit the code, let we check what kind of output we get. Java C this 5.java. Okay, compilation is done. The final thing is this 5. Okay, so what test constructor is called. Clear? Yes, sir. Okay then. Last things, right? Last way to declare this keyword, which is you can call
last thing, one can be used to return current class इंस्टेंस, राइट। आपको करंट क्लास का इंस्टेंस रिटर्न करवाना है तो आप कर सकते हो किस क्लास का यूज, किसका यूज, दिस कीवर्ड का, राइट। सो दिस कीवर्ड इज यूज टू to call your current class instances also, right? Let me see how it's do. So I'll just save this 6.java class, this 1 minute, this 6 main. Here we'll just create one class top taste, right? I required to call the instance, right? मुझे क्या करना है यहाँ पे, रिटर्न करना है करंट क्लास का इंस्टेंस रिटर्न करना है, राइट। और वो मैं कैसे करूंगा, राइट। सो उसको करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर्ड, वी हैव टू रिटर्न, राइट। हमें रिटर्न करना है, सो रिटर्न करना है, सो वी यूज अ विच कीवर्ड, रिटर्न कीवर्ड वी रिक्वायर्ड टू यूज, राइट। और आपको करंट क्लास का इंस्टेंस करना है तो कंपलसरी आपका स्टेटमेंट क्या फॉर्म होगा, ऐसा कुछ फॉर्म होने वाला है, रिटर्न दिस। सो वो हम क्या करेंगे, सो आई जस्ट डिफाइन वन मेथड हियर, void m1 and I'll just place in this method return this, right। मैंने सिर्फ उसको इतना बोला है कि return this करना है, right। now let me check, let me do one thing, right। I'll just create a object, right। so can we create an object direct test dot m1, can we do like this directly, is it possible? Is it possible without reference variable, can we do? No, sir. No? Sure? Sure. Run करूं? Sorry, 1 minute, my mistake. यहाँ पे रिटर्न दिस हो रहा है तो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ना हमको, सो टेस्ट एम बनाएगा, नॉट दिस एम बनाएगा, राइट। वॉइड नहीं आएगा। रन करें, चलिए लेट्स सी दिस 6.java compilation done my dear। without reference variable we can call the methods, right। let's see आउटपुट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने कोई स्टेटमेंट डाला ही नहीं है, डाला ही नहीं तो आउटपुट हमें वैसे भी नहीं मिलेगा, राइट। सो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा इसका, बट स्टिल वी गेट अ परफेक्ट कोड, राइट। अगर मुझे पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना है, राइट, तो वो मैं कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कोई और मेथड बना दूं void m2 करके, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ system dot out dot println m2 is called, right, and I have to just call here dot m2, is it possible? सर आप कॉम्प्लेक्स कोडिंग करते जा रहे हो, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो या हमें पढ़ा रहे हो, हैं? आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा वो मुझे पहले बताओ। आएगा सर आउटपुट। आउटपुट आएगा, क्या मिलेगा मुझे, m2 is called ऐसा, हाँ ओके लेट मी चेक, m2 is called। कंपाइलेशन डन, m2 is called। अब आइए आया कैसे, देखो यहाँ पे न्यू कीवर्ड से आप डायरेक्टली भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो विदाउट रेफरेंस वेरिएबल, तो वो डायरेक्टली आपके मेथड्स को भी कॉल कर सकता है, इट्स पॉसिबल, राइट। तो कभी भी एमसीक्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो डोंट से दैट कि विदाउट रेफरेंस वेरिएबल वी कांट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट और वी कांट होल्ड एनी ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट लाइक दैट, you can directly hold the objects without any reference variable, right। so ये हो सकता है, this is the possible। second we write a m1, right। so m1 is providing the return type of टेस्ट ऑब्जेक्ट, राइट, बिकॉज विल रिटर्न अ टेस्ट, राइट। और यहाँ पे मैंने दिस ही किया हुआ है, तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा जेवीएम के अंदर उसी ऑब्जेक्ट को वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, राइट। अब मैंने उसको प्रिंट नहीं करवाया है, राइट। अगर मैं प्रिंट करवाता उसको तब जाके मुझे उसका वैल्यू या आइडेंटिफिकेशन या हैश कोड कुछ भी मिलता, बट मैंने प्रिंट नहीं करवाया।
और मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है उसी ऑब्जेक्ट से किसको कॉल कर रहा हूँ, M2 को, राइट। तो अल्टीमेटली ये जो मेथड M1 है वो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी वही ऑब्जेक्ट क्या करेगा, M2 को कॉल करेगा, और हमें हमारा जो मेथड है उसका स्ट्रक्चर जो है वो वापस मिलेगा, राइट। क्लियर, अभी समझ में आया शैलेश? यस। तो क्लियर। फिर सर रेफरेंस वेरिएबल क्यों हमको हर रेफरेंस बार करनी वेरिएबल आप पड़ती है? ले सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल इज अनदर थिंग, राइट, आप उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली डू डिफाइन दैट विदाउट रेफरेंस वेरिएबल, दोनों, दैट बोथ आर द पॉसिबल वेज, राइट। अदरवाइज no other ओके। differences between that particular reference variable or directly access the content, right, both are the possible ways, you can do it with any way. Clear? ओके सर। यस। ओके, सो दिस इज इट, यहाँ पे आपका पूरा दिस कीवर्ड का वर्क कंप्लीट हो जाता है, राइट। दिस कीवर्ड हम इतनी जगह पे यूज कर सकते हैं, वी कैन कॉल, वी कैन रिफर द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, we can invoke the current class method, we can invoke the current class constructor, we can pass the argument in a method, we can even pass argument in a constructor call, we can even call the return current class instance also, right. So these all are the possible ways to call the this, to use the this keyword. Clear? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है दिस कीवर्ड में तो मुझे पूछ लो, ये पूरा डीप डाइव हो गया हमारा कि कहाँ कहाँ हो सकता है कोई डाउट कि मैं आगे बढ़ूं? यस सर। Okay, so do one thing, we have only 1 minute to left, right? तो आप एक काम करो, आप एक बार रिकनेक्ट हो जाओ, उसके बाद में नया कीवर्ड स्टार्ट करता हूँ, सुपर कीवर्ड, ओके।